अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 14 रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। लेक्चर ओवरव्यू कुछ इस तरह है कि फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन, देन इज़ ओवरव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, next is going to be risk assessment, and the last is the risk control strategies. Now, what a risk is? A risk is the chance or the probability or the likelihood of harm or exposed to danger, etc. Here we can see the definition is the likelihood of the occurrence of a vulnerability, which is multiplied by the value of the information asset minus the percentage of risk mitigated by current controls. The current controls are designed, the controls you can say are designed to protect the system. So here we say the minus current controls. We have design controls where there are checks and who is allowed, who is not allowed, what data or information is available and what should not be available, what resources should be available, what resources should not be available, things like that, as we have seen in the previous lecture, which was about information security. So we design controls plus the uncertainty of current knowledge of the vulnerability. Here we can have a very brief and definition for risk management. It is a systematic process of evaluating the potential risks that may be involved in a projected activity or undertaking. And what risk management is to identify, evaluate and mitigate risks to an organization. Risk management, it's cyclic. It means that it is a continuous process, and to design risk management strategy, we need to know what we have, we need to know what threats are likely, and we need to know how and how well it is protected, and we need to know where the gaps are. जब हम एक सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं तो वी एज ए यूज़र ट्राई टू ब्रेक थ्रू द सिस्टम, और हम डिफरेंट अटैक्स जो हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं, जो कि वी ट्राई टू असेस द सिस्टम, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कितना जो है सिस्टम हमारा जो है वो रिलायबल है, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सेट्रा जो हैं वो इसके ऊपर ट्राई होते हैं। डिफरेंट अटैक्स डिज़ाइन इसके लिए होते हैं। वी ट्राई टू sneak into the system, or we see how strong the system is designed, तो जो कि हमें बताता है what the loops are और how well the system is protected। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि वी शुड नो व्हाट रिस्क्स आर इन्वॉल्व्ड। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिस्क दैट कुड पोटेंशियली प्रिवेंट द प्रोग्राम और enterprise or investment from achieving its objectives. It includes documenting and communicating the concern. जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। तो जो इसके फंडामेंटल जो फंडामेंटल इसके बोल्ट्स हैं उसमें है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन है कि रिस्क इवेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड। फिर है एसेस प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि कितने जो है इसमें प्रोबेबल है, डू एंड डू नॉट। फॉर एग्जांपल हम घर से निकलते हैं तो कितने चांसेस हैं कि हम भाई मोटरसाइकिल से जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस कितने हैं, हमें गाड़ी ना मिले उसकी चांसेस कितने हैं। तो ये सब रिस्क हैं। बारिश हो
तो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, हम लेट होंगे या टाइम पे पहुंचेंगे। तो ये सब रिस्क जो हैं, हम रोज़ाना रिस्क जो हैं वो लेते हैं। और इसी तरह कंप्यूटर में भी, साइबर वर्ल्ड में भी रिस्क जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन में रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट भी है, रिस्क ट्रैकिंग भी है, रिस्क मिटिगेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग है, risk prioritization analysis है। तो all these things are included in risk identification. Or the objective of risk identification is the early and continuous identification of events that, if they occur, will have negative impact on the project's ability to achieve performance or compatibility outcome goals, and they may come from within the project or external sources. It can be within the project, or there are some external sources involved. So there are multiple types of risk assessments, including program risk assessments, risk assessment to support an investment decision, analysis of alternatives, and assessments of operational or cost uncertainty. Risk identification needs to match the type of assessment required to support risk-informed decision making. For an acquisition program, the first step is to identify the program goals and objectives. What the goals are, what objectives we have. So thus fostering a common understanding across the team of what is needed for program success. So this gives context and bounds the scope by which risks are identified and assessed. So in a system engineering program, for risk identification, the project team review the program scope, cost estimation, schedule, technical maturity, key performance parameters, performance challenges, stakeholder expectations versus current plan, external and internal dependencies, what we have, and implementation challenges, integration, and interoperability, supportability, expectations, safety, security, and many more things that needs to be looked into before doing the risk identification. So in addition to this, we look into the historic data from similar projects, stakeholder interviews, and risk lists provide value insight into areas for consideration of risk. The so the so what we have is, we have assets that we are going to protect, and we have possible threats. As we have seen, that these can be internal or external sources from where we have threats. There are vulnerabilities, weaknesses in the project, and then we design the controls to safeguard the system. So the overall rating of probability that a specific vulnerability will be exploited. So often using numerical value on a defined scale, we define a scale from in probability we have values from ranging from 0 to 1, not from 0, but we can say 0.1 to less than or equal to 1. These are probable events. The probability will be like 0.1, 0.125, 0.35, 0.4, 0.45, will be like that. So we see how probable things are to happen. Next is risk assessment. We assess the potential loss, what potential loss we are going to have in case certain events that occur. So the questions that needs to be asked when assessing the potential loss is, which threats present a danger to this organization assets in the given environment. And we categorize the threats, high, medium, low,
or we make them in some order that we know this is the most dangerous, this is the least, this is the in normal form. So in this way we represent the threats that are involved. And obviously the cost is a major factor, cost and time and money. So cost, what will be the cost to recover from a successful attack? And the questions that needs to be asked when assessing protection loss, which we can be which threats would require the greatest expenditure to prevent, कितना ज़्यादा हमारे ऊपर उसके ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे कि हम एक थ्रेट को जो है वो ब्लॉक कर दें। और जी जितने भी हमने क्वेश्चंस जो हैं ये किए हैं, इसमें से सबसे जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन या जिसकी हाई वैल्यू जो है उसकी क्या है, कौन से क्वेश्चन की है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम थ्रेट्स विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये चीज़ें जो है वाइल असेसिंग ए पोटेंशियल लॉस वी डू लुक इनटू दीज थिंग्स कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल एक लॉस हमारा हो गया है तो हाउ मच टाइम इट टेक्स, हाउ मच मनी इज़ इन्वॉल्व, सीवियरिटी क्या है, उसके नुकसानात की जो है जितने भी हैं उसका किस लेवल पे जो है इसका नुकसान है। अच्छा, ये सब प्रोबेबल इवेंट्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस होते हैं कि इफ़ दैट बट एंड और सब जो है इसको कैलकुलेट, तो ये सब प्रोबेबल इवेंट्स हैं, दिस मे और मे नॉट अकर, बट टू बी ऑन द सेफ साइड you do the risk assessment which is very important. So percentage of risk mitigated by current controls, इसके अंदर जो है अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी कहते हैं कि जो है वी डोंट नो, अभी वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मिनट और नेक्स्ट सेकेंड और नेक्स्ट आवर और नेक्स्ट डे, very uncertain events that may happen. So it is not possible to know everything about each vulnerability. So the degree to which a current control can reduce risk is also subject to estimation error. Uncertainty is an estimate made by the manager using judgment and experience. There are different techniques to measure the uncertainty and to measure the probability of certain events that may occur. So next we have risk determination. So where we determine the what's the value of the asset and how many vulnerability it has, what is the likelihood with no current control. So the assumptions and data we have are if they are 90% accurate, and then for the asset B it has a value of 100 and has two vulnerabilities, has a likelihood of 0.5 with a current control that addresses 50% of its risk. Vulnerability number 3 has a likelihood of 0.1 with no current control. The assumption and data are 80% correct. So this is an example of risk assessment. And we have likelihood and consequences. So, that how likely it is that how likely our data is vulnerable and what consequences we may have after some event has been occurred. Here we see the from the Australian and New Zealand Risk Management Standard 436, I uses qualitative methods of determining risk based on a threat's probability of occurrence and expected results of a successful attack. The consequences are evaluated on 5 levels ranging from insignificant level 1 to catastrophic level 5 as assessed by the organization.
Qualitative likelihood assessment levels are represented by values ranging from A, almost certain, or E, rare, as determined by the organization. So for consequences, they have according to the standard of Australia and New Zealand risk management. For consequences, they have level 1 to level 5, which shows the severity of an event. اور لائکلیہوڈ کے لیے جو ہے اے ٹو ای یوز کرتے ہیں. اے جو ہے وہ آلموسٹ سرٹن کے لیے کہ دس از گوئنگ ٹو سرٹنلی گوئنگ ٹو ہیپن, اور یہ جو ہے ریئر ہو سکتا ہے کہ یہ ایونٹ اگر ہو مے بی نہ ہو. So we have risk control strategies where we identify possible controls. So for each threat and associated vulnerabilities that have residual risk, create a primary list of control ideas. 3 general categories of controls exist, which includes the policies ہیں, programs ہیں, technical controls ہیں کہ کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے, تھرو پالیسی ہو سکتا ہے. پالیسی میکنگ ایڈمنسٹریٹر نے جو ہے رائٹس اسائن کر دیے ہیں ڈفرینٹ یوزرس کو, ڈفرینٹ رائٹس اسائن ہیں, تو یہ ایک پالیسی ہے. پروگرامز ہیں, فائر والز ایکسیکٹرا کہ شوڈ بلاک دی انٹروڈرز اور سم ان نون پیکٹس. ٹیکنیکل کنٹرولز ہیں, دیٹ کین بی ہارڈ ویئر اور سم تھنگ لائک دیٹ. یہاں پہ ایگزامپل ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں لیول دیے گئے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا سلائیڈ میں, پریویس سلائیڈ میں, جس میں ہم نے کہا کہ بھئی جو آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ رسک مینجمنٹ اسٹینڈرڈ ہے 4360I, تو وہ اس کو یہ ایک پریکٹیکلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ لیول 1 جو ہے انسگنیفیکنٹ ہے, 2 مائنر ہے, 3 ماڈریٹ ہے, 4 میجر ہے, 5 جو ہے کیٹاسٹروفک ہے. اور لائکلیہوڈ, اچھا پھر جو انہوں نے اے بی سی ڈی ای جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں, تو اے از آلموسٹ certain, is expected to occur in most circumstances, most of the time it may happen. Likely ہے, will probably occur in most circumstances. Possible might occur at some time, or unlikely could occur at some time, or rare may occur only in exceptional circumstances. تو یہ جو ہے انہوں نے لیولز جو ہیں ڈیفائن کیے ہیں. جب بھی ہم کوئی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کا رسک اسسمنٹ جو ہے جب ہم نے کرنا ہو, تو ہم اس کو جو ہے اس طرح جو جتنے بھی رسک انوالو ہیں ان کو ہم اس طرح کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, وہ جو کہ لیول نومیرک میں 1 to 5 ہو سکتے ہیں, اور الفابیٹک میں A to E ہو سکتے ہیں. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہوں, کیوریز ہوں لیکچر کے بارے میں, تو یو کین رائٹ اس این ای میل. کورس ای میل پہ کر دیں, MDB میں کر دیں, اینڈ وی ول سرٹنلی ریپلائی ٹو آل یور کویشچنز. اوکے جی, تھینک یو فار ناؤ. السلام علیکم.